Hello and welcome to Weekly Wrap, where we get you latest news and updates of top events from Cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. And I am Vishakha Thakur. Virtual digital asset or VDA space encountered uncertainty in the US macroeconomic environment, spreading fears of recession, which in turn sent investors to seek safety in less risky assets such as bonds and currency markets. The rally in the most popular private virtual digital currency, Bitcoin, was stalled as investors opted for caution ahead of the crucial payroll data that holds potential to sway the Federal Reserve decision against broadly anticipated rate pause. Bitcoin was last struggling to hold $28,000 mark. It witnessed a narrow range movement throughout the week. Michael Saylor's MicroStrategy purchased an additional 1,045 Bitcoins for a total of $23.9 million, or an average price of $28,016 between March 23rd and April 4th, according to a Securities and Exchange Commission filing. The latest purchase brings the company's Bitcoin holdings up to approximately 140,000, worth roughly $4 billion at the current price. Bitcoin market liquidity has dropped to a 10-month low despite a bullish quarter in terms of price gain. The liquidity dry-up is partly attributed to the bank run in the United States and the ongoing regulatory actions against crypto companies. BTC's price has registered a 45% surge in 2023, making it one of the best performing assets. The price gains come amid a looming financial crisis in the traditional financial market, with stocks and bonds seeing one of their worst years. As the financial crisis has worsened, several banks have collapsed. The banking crisis has also directly impacted the crypto ecosystem. The collapse of crypto-friendly banks such as Silicon Valley Bank and Signature Bank removed important US dollar payment rails for crypto, leading to a liquidity crisis, especially on US exchanges. तो यहाँ बिटकॉइन का प्राइस जो था उसमें बढ़ोतरी यहाँ दिखाई दी, तो $28,000 के जी बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा था बिटकॉइन $28,000 पर एक मार्क है उसके लिए, लेकिन यहाँ पे दिखाई दिया कि जो लिक्विडिटी है वो नीचे चली गई। और ये जो रीज़न इसके लिए है वो ये है कि पहला तो बैंक रन जो यूएस में हुआ है, जितने भी क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक्स थे, सिलिकॉन वैली बैंक, सिल्वरगेट, या यहाँ पे बात करें अगर हम सिलिकॉन वैली, सिल्वरगेट और सिग्नेचर बैंक की, तो इसके साथ साथ जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि जो ऑनगोइंग रेगुलेटरी एक्शन चल रहे हैं जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, फॉर एग्जांपल जापान में अभी ये हो रहा है, तो यही जो रीज़न है इसकी वजह से जो लिक्विडिटी है बिटकॉइन की वो नीचे जाती दिखाई दी। जी बिल्कुल। बढ़ते अगली खबर की तरफ। Ethereum's value soared to a remarkable 8-month peak of around $1,925 on Bitstamp exchange on Wednesday, continuing its recent winning streak. The price increase was primarily driven by the anticipation surrounding the forthcoming Shapela network upgrade, a pivotal development in Ethereum's ongoing evolution. Also referred to as the Shanghai upgrade, Shapela marks the completion of the second largest blockchain's transition to a proof-of-stake consensus mechanism. This shift from the energy-intensive proof-of-work model is expected to improve Ethereum's energy efficiency, reduce transaction fees, and enhance its overall scalability. तो जब शुरू हुआ था, मुझे याद है वो टाइम जब इथीरियम का प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक का पहला जो उनका वो था शिफ्ट वो शुरू हुआ था, तो बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन, बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट थी। विटालिक बुटेरिन के भी बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे थे, वीडियोस आ रहे थे। तो अब जो उनकी पूरी मेहनत है वो कहीं ना कहीं खत्म होती दिखाई दे रही है, क्योंकि 12 अप्रैल को जो है वो शपेला जो इनका अपग्रेड है वो पूरा हो जाएगा और पूरा जो प्रूफ ऑफ वर्क से लेकर प्रूफ ऑफ स्टेक का जो पूरा ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड हम जानते ही हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है पूरी, इसमें जब भी कुछ भी नया होता है, कोई नई अनाउंसमेंट होती है, कुछ नया शुरू किया जाता है, तो एक मार्केट सेंटिमेंट बनता है और उसी का फ़ायदा अभी फ़िलहाल इथीरियम को मिल रहा है, जो फ़िलहाल $1,925 पर है। एंड हमने जो इथीरियम का बेस्ट टाइम देखा था वो कुछ ना कुछ $3,600 का देखा था। एंड आई थिंक जिस तरह से ये ऊपर जा रहा है, आई थिंक शायद वो मार्क भी ज़्यादा दूर नहीं होगा। बिल्कुल, तो यही रीज़न है कि क्यों इथीरियम ऊपर जा रहा है। तो ये जो शपेला नेटवर्क अपग्रेड, यानी कि जिसे शंघाई अपग्रेड भी कहा जाता है, वो आने वाला है और यही रीज़न है कि जो इथीरियम का प्राइस है वो ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। Moving on,
On Tuesday, DogeCoin's Shiba Inu dog replaced Twitter's Bluebird as the social media company's logo, boosting the meme coin's market value by up to $4 billion. Elon Musk indicated in a tweet on Monday that he had delivered on his promise of changing the social media app's logo to DogeCoin's dog and the token, which was born as a satire of a cryptocurrency frenzy in 2013 and has no fundamental use, surged to 10 cents around 1500 EST from 7 cents. According to data site coinmarketcap.com, Dogecoin is now the 7th largest cryptocurrency with a market capitalization of $13.7 billion. Before the news, its market value was around $10 billion. The Tesla boss on Friday asked a US judge to throw out a $258 billion racketeering lawsuit accusing him of running a pyramid scheme to support Dogecoin. Dogecoin more than doubled in October after Musk, dubbed the Doge father by retail traders, sealed a $44 billion deal to take over Twitter in October. तो यहाँ पे $4 बिलियन जो डोजकॉइन का जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा जब एलॉन मस्क ने ट्विटर को ये जो डील वो सील की थी तो $44 बिलियन में ट्विटर को एक्वायर किया था और फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हलचल रही पूरी मार्केट में। डोजकॉइन का जो प्राइस था तब डबल हो गया था, वो बिल्कुल डबल से भी ज़्यादा हुआ। और अब फाइनली जब ट्विटर का जो बर्ड का लोगो है तो सभी के माइंड वो एक सेट है कि ट्विटर का ये ऑफिशियल लोगो है, लेकिन एकदम से जब डोजकॉइन के जो उस मीम कॉइन में वो बदल गया तो सभी को ये एक्साइटमेंट हुई कि अभी और इसकी वजह से ही है जो $4 बिलियन जो है ये मार्केट वैल्यू इसकी बढ़ गई है। हमने हमेशा देखा है इलॉन मस्क का कुछ तो एक झुकाव है डोजकॉइन की तरफ से, वो शुरू से इसको सपोर्ट करते हैं। पहले बीच में खबर ये भी आई थी कि जब वो ट्विटर को टेक ओवर कर लेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे जो प्रमोशंस या एड्स हों उनकी पेमेंट्स डोजकॉइन में हो। तो जब भी वो डोज को लेके कुछ ट्वीट करते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ बयान देते हैं, तो हमेशा उसका एक हमने इफेक्ट देखा है डोजकॉइन पर, हमेशा वो पॉजिटिव ही होता है। तो अभी भी वो हमने पॉजिटिव देखा है। has become the seventh largest cryptocurrency, which started as a meme coin, as a joke. So moving on, economic superpowers are stepping up their efforts to break free from US dollar hegemony, raising the possibility of the emergence of a new global order. The senior Russian official reportedly stated that the BRICS group is aiming to develop its own currency. Brazil, Russia, India, China, and South Africa are the top 5 emerging economies that make up the BRICS acronym. Local media reported that Alexander Babakov, the deputy chairman of the State Duma, made the remarks at the St. Petersburg International Economic Forum occasion in New Delhi, India. The accord will reportedly allow for direct trade and financial operations between China and Brazil, the largest economy in Latin America. Instead of flowing through the dollar, Chinese yuan will be converted into Brazil real and vice versa. तो यहाँ ये जो ब्रिक्स की जो 5 ये बहुत ही इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, इन्होंने ये साथ में ये फैसला किया है कि वो जो डॉलराइजेशन है उसको कम करेंगी। डॉलराइजेशन को अपनी इकोनॉमी पर हावी होने नहीं देंगी। हेजेमनी में जो है डॉलर का वो नहीं चाहते कि डॉलर का हेजेमनी यूज़ किया जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि वो अपनी एक करेंसी लेकर आए। लेकिन वो करेंसी आए उससे पहले फ़िलहाल शुरुआत इससे हो गई है कि चाइना और ब्राज़ील के बीच में जो भी ट्रेड होगा वो अब युआन को जो है कन्वर्ट किया जाएगा या रियल में, या फिर रियल को युआन में कन्वर्ट किया जाएगा। हाँ, दे विल नॉट यूज़ डॉलर एज अ मीडियम। तो इसका मतलब यूएस के लिए यहाँ पे एक खतरे की घंटी दिखाई दे रही है कि उनसे भी स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज यहाँ बन रही हैं। बिल्कुल, जो ये टॉप 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, इन्होंने ये डिसीजन लिया है अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाने का। और दिल्ली में जो ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम जो ये मीट हुई है, तो इसी में जो डूमा के डेप्यूटी चेयरमैन हैं उन्होंने ही ये स्टेटमेंट दी है, विच इज़ एक्चुअली अ बिग थिंग। मूविंग ऑन, Japan's financial services agency said foreign crypto exchanges Bybit, BitForex, MEXC, Global and BitGet are operating in the country without proper registration in a warning letter published on Friday. The notice said the exchanges were in violation of the country's fund settlement laws at the time of issuing the warning letter by conducting crypto asset exchange business without registration. The regulator also said the list of unregistered traders does not necessarily indicate the current state of unregistered business. तो यहाँ जापान ने बायबिट के साथ साथ अन्य 3 जो एक्सचेंजेस है उन पर ये जो एक्शन है वो लिया है, क्योंकि इनका कहना है कि ये अनरजिस्टर्ड थी।
तो देखा जाए तो जापान इतना स्ट्रिक्ट नहीं है अपने रेगुलेशंस को लेकर, अगर हम इंडिया और यूएस की तरफ देखें, लेकिन फिर भी एक्शन लिया गया है और जापान साथ साथ अपने रेगुलेटरी एक्शंस लेकर भी आ रहा है। तो ये भी एक तरह से अच्छी बात है इस तरह से कि वो रेगुलेशन लेकर आ रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो एक एंटी क्रिप्टो सेंटिमेंट भी बन रहा है, ये भी सामने आ रहा है। तो देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है। Moving on, other side, relics by Gucci, a limited edition series of physical Gucci products and associated NFTs tied into the lore of Other Side, Yuga's long-awaited ape-themed metaverse game was announced on April 3rd. Other Side revolves around a mysterious species of aliens known as Coda and their as of yet murky relationship with the titular apes of the BAYC. The Coda pendant, an NFT representing both a physical piece of jewelry and a non-fungible token that will unlock numerous perks within the Other Side metaverse, will be the first relic to be released as a result of Yuga's collaboration with Gucci. On Thursday, April 6 at 6 p.m. EST, exactly 3,333 Coda pendants will be available for purchase. They can only be bought with ape coins, Yuga's native cryptocurrency, and will each cost 450 ape. Coda pendants will only be available to current holders of Coda or Vessel NFTs. तो मुझे ये जो पूरा युगा लैब्स ने जो ये BAYC डेवलप किया है, पूरी मेंबरशिप क्लब बनाया, आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया विच आई थिंक अदर NFTs आर ऑल्सो अडॉप्टिंग और ट्राइंग टू अडॉप्ट, क्योंकि ये एक तो मेंबरशिप है तो बहुत सारे यूजर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारे मैं कहूँगी रिवॉर्ड्स होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए जाते हैं। तो कुछ ना कुछ करके युगा लैब्स हमेशा अपने इकोसिस्टम को बढ़ाता है, अपने बिजनेस को बढ़ाता है। जैसे अदर साइड वो अपना मेटावर्स लेकर आया जिसके अंदर NFTs हैं, अदर डीड, और अब वो देखिए कितने बड़े बड़े कोलैबोरेशन इसमें गुची जैसे बड़े लग्जरी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया है। उसके अंदर एक एप का गेम लेकर आए हैं, उसमें इतनी सारी चीज़ें जहाँ पे एक अच्छा एक्सपीरियंस यूजर्स को मिल सकता है, रिवॉर्ड्स ले सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया जो कि आगे और भी NFTs जो है या मेटावर्स है वो अडॉप्ट करेंगे। जी, तो क्या आप ये 450 एप का कोडा पेंडेंट खरीदने बिल्कुल लूंगी, बिकॉज आई नो इसका प्राइस बढ़ेगा। जी, तो जैसे कि आपने बात की कि ब्रांड्स काफ़ी ज़्यादा Web3 की तरफ दे आर फॉलोइंग टुवर्ड्स मेटावर्स एंड अलॉन्ग विद Web3। तो गुची ने यहाँ पे मेटावर्स फैशन वीक जो अभी डिसेंट्रलैंड पे हुआ 28 से 31 मार्च तक, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया। हालांकि यूजर्स इस बार कम, अटेंडीज कम थे, लेकिन फिर भी गुची कभी भी पीछे नहीं रहा है और आगे भी इसी तरह से Web3 की ओर। आई थिंक women want physical clothes and their love for clothes, वर्चुअल से काम नहीं चलता। Moving on, according to data from Diaprada, the NFT market exploded in February, surpassing $2 billion in total trading volume, a 117% rise from the prior month. And the numbers only revealed a modest decline to under $2 billion in March, almost maintaining the momentum. According to market-wide data from Diaprada and additional on-chain data from Dune, trading volume in March was slightly over $1.95 billion, down roughly 4% from the $2.04 billion total in February. With almost $1.35 billion in Ethereum NFT trades, up marginally from roughly $1.32 billion in February, Blur once again accounted for the great majority of that trading activity. Blur trading activity surged in mid-February when the marketplace launched its Blur reward token, which has incentivized mass flipping from whale traders, that is, traders who hold large positions in a given collection and act as so-called market makers. तो कहा जाता है कि 2021 was the year of NFTs, जहाँ पे NFTs ने इतना बूम किया, और अब ब्लर और ओपन सी के जो ये एक तरह से स्टार्ट जो ये चला, उसके बाद ब्लर जो अपना टोकन लेके आया, उसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादातर ब्लर में जो है वो वेल्स की मूवमेंट्स देखी और बहुत ज़्यादा। तो ब्लर ने अक्टूबर में ब्लर आया, मतलब कुछ 4-5 महीने हुए हैं, और आते ही इतना उसको पंप दिखा हमें, क्योंकि हमने देखा है बहुत कुछ किया ब्लर्स ने। इसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी थी, कुछ जायज़ भी थी, मैं कुछ कहूँगी कुछ सही नहीं भी थी, बिकॉज जहाँ पे टोकन एयर ड्रॉप किए जिससे बहुत ज़्यादा उसको अक्वायर किया वेल्स ने, फिर आगे ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा ब्लर उसमें हुई, फिर ब्लर रिवॉर्ड्स बहुत सारे दिए। एंड येस, हम कह रहे हैं कि ब्लर की वजह से $2 बिलियन की जो है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम रही है, फेब में भी रही है, मार्च में भी रही है, लेकिन वी शुड नॉट फॉरगेट कि ब्लर को ही सबसे ज़्यादा परसेंटेज भी रही है कि वॉश
ट्रेडिंग देखी गई है उस प्लेटफॉर्म पे, विच इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग। आप अगर वॉच ट्रेडिंग करके ही अपने आप कॉइन को अपने बढ़ा रहे हैं या फिर अपने NFT की ट्रेडिंग वॉल्यूम और सेल्स को बढ़ा रहे हैं, पंप कर रहे हैं, देन दैट्स नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। सो लेट्स सी, अभी ये कंपटीशन बिल्कुल ऑन है। ओपन सी अपने प्लेटफॉर्म पर बहुत कुछ चेंज कर रहा है, ब्लर की देखा देखी, जैसे अब ओपन सी प्रो लेकर आया जिसपे कि ट्रांजैक्शन फीस नहीं है, बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं। तो अभी कंपटीशन तो चल रहा है, इस कंपटीशन में जीत किसकी होती है और कौन एक फेयर गेम खेलता है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा जी। Moving on, Dhoni was awarded a fan-crazed digital collectible of the moment at a special event in Chennai on Sunday, 2nd April, to commemorate the anniversary of his iconic World Cup 6. MS Dhoni received a Navarasa-themed digital collectible centered on the emotion of glory from fan craze. The event in Chennai was broadcast live on the ICC Facebook page. Navarasa is the concept upon which the ICC Men's Cricket World Cup 2023 brand identity is based. It is based on the 9 emotions that fan experiences during a game. That is joy, power, anguish, respect, pride, bravery, glory, wonder, and passion. The 9 emotions. ICC launched the brand identity for the 2023 event, set to be played in India earlier on Sunday to mark a momentous day in the history of Indian cricket. तो एक बहुत बड़ा वो मोमेंट था, वो मोमेंट जो ना तो धोनी कभी अपनी लाइफ में भूल सकते हैं ना उनके फैंस भूल सकते हैं, जब उन्होंने वर्ल्ड कप के वो जो लास्ट बॉल पे उन्होंने दैट विनिंग शॉट उसके बाद ही हुआ कि यस वी वन द वर्ल्ड कप। तो उस मोमेंट की, उस गोल्डन मोमेंट की जो है एक डिजिटल कलेक्टिबल बना के फैन क्रेज ने गिफ्ट किया है धोनी को, which I think is a very very special moment. Sweet gesture. जी, तो ICC के Facebook पेज पे ये लाइव दिखाया गया एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। और जो आगे भी जो काफ़ी ज़्यादा गेम्स है, कितनी स्पोर्ट्स कंपनीज है जो मेटावर्स में आ रही हैं या NFTs क्रिएट कर रहे हैं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं कुछ, तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। Yes. So that's all in this episode of the Weekly Wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.0 TV and have a great weekend.